A conceptual problem. Arm PQ. This is arm PQ of rectangular conductor. This is a rectangular conductor. ये आर्म यहाँ है, ये क्या बन गई एक रेक्टेंगल. Arm PQ of rectangular conductor is moved from x0 to right side. This is x0. Given है ये फिगर भी given है क्वेश्चन. Arm PQ of rectangular conductor moved right from x is equal to 0. This is x is equal to 0. To right side, magnetic field perpendicular to plane. ये इसका प्लेन है कंडक्टर का. इधर जो रेक्टेंगुलर कंडक्टर है ये उसका प्लेन है. प्लेन इट इज परपेंडिकुलर टू बी. ये क्रॉस बी एक्सटेंड्स फ्रॉम x0 टू xb. यहां तक है मैग्नेटिक फील्ड. x0 टू xb, आगे नहीं है. Only arm PQ possessive resistance R. So this arm only possessive this resistance small r, not this arm. Arm is pulled from x0 to x2b. यहाँ से पुल करके यहाँ चली गई and back आ गई with constant speed v. Obtain expression for flux, induced e.m.f, force necessary to pull arm, power dissipated as joules heat. Then next, sketch variation of these quantities with time. Again listen the question. ये रेक्टेंगुलर कंडक्टर है. ये पी क्यू आर्म है. पी क्यू ये डॉटेड चीज जो दिखाई रेक्टू. इट इज फ्री टू मूव. दिस आर्म इज फ्री टू मूव. ये आ रही है पी क्यू, ये यहां आ जाएगी. फ्री टू मूव. इट इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. ये अंदर है बोर्ड के अंदर. तो ये प्लेन इसका परपेंडिकुलर है. ये फील्ड x0 टू xb है. यहां तक है फील्ड, यहां नहीं है. और ये आर्म यहां से पुल होगी वेलोसिटी v से. तो obtain expression for flux, induced e.m.f, force, flux. Phi b l dx ba cos theta theta 0. It is blx. It is 0 when x 0. It is blb when x is b. Flux bl dx b 0 when x greater than b. X equal to b. तो 0 it is constant and that constant is what? BLB. Similarly, reverse. When conductor moves back.
दिस इज फाइव, यहां तक बी है, यहां से आगे बी क्या है, जीरो, जीरो इंटीग्रेशन कांस्टेंट, EMF, it is minus BLV, x 0 x B, it is 0 LV, it is 0, x greater than B, x is equal to 2B, B 0, similarly reverse as conductor moves back, flux induced EMF force, sorry, is minus BLV, it is 0, it is minus BLV, B is 0, so it is 0. Force I L B साइन थीटा साइन 90 L और B के बीच का एंगल ये L और ये B 90 ILB when or it is what E by R LB or it is E BLV by R L square P square when X 0 to X B and F 0 when X greater than B and X to B as capital B is 0. It is also minus and it is 0. Similarly, reverse. Power EI E square by R E square plus B square L square V square by R when X is 0 2x is D and power 0 as B 0 when X greater than B X 2. So this is what expression for flux induced EMF force power
Now, last is sketch these quantities with respect to time. x0, x b, x to b, x b, x0. Arm PQ is moved from x0 to xb, then back. This is T, this is T, this is time, this is time, this is flux, this is e.m.f, this is force, and this is power. Flux 0, BLB, it is BLB, it is BLB, it is reverse. Sketch e.m.f. minus BLV e.m.f 0 reverse BLV reverse is 0 up to be minus BLV, then 0, reverse 0, then plus. उलट कर दो. Force, force, negative, minus B square L square V square by R 0 0 force minus B square L square V by R. Then what? Power. Here 0 to plus. It is plus. B square L square V square by R. This is what plotting of flux with respect to time, e.m.f with respect to time.
Now some numericals. A metal wheel having 10 spokes each 0 meter revolve around axle with velocity 400 radian per second in magnetic field 0.4 Gauss acting perpendicular to plane of wheel. What is induced e.m.f. between axle and circumference of wheel? This is a wheel. It is having 10, 4, 6, 8, 10 scopes. ये L है, ये एक स्पोक की लेंथ. It is what 1 meter. This is the magnetic field. Tesla. This field, the wheel is on board, it is revolving around this marker, and magnetic field is marker. Plane के perpendicular है. E, we have to calculate omega 400 radian per second. This is length of 1. Then E, B, L, V. ये the formula. When conductor rotates, conductor moves BLV था, BLV. एक एंड पर 0, एक पर मैक्सिमम V/2, VL ओमेगा. भूल जाओ तो यहां से बना सकते हो, नहीं तो ये आर्टिकल था. B is B. B is 0.4 10 की -4 L square 1 ओमेगा by 2 0.2. It is 8 10 की -3 volt. P
volt. Induced e.m.f. for 10 spokes this is for one spoke ये एक के लिए थी ये for 10 is this as they are in parallel. वही पॉइंट है, यहाँ भी वही पॉइंट है, 2 पॉइंट्स, ये भी वही 2 पॉइंट्स है, सरकमफ्रेंस वही है, तो 10 के भी लिए वही. An aeroplane is flying horizontally with speed kilometer per hour at a place where angle of dip is 30 degree. And wingspan is 25 meter. A. Find induced e.m.f. across wings when earth magnetic field is 0.4 Gauss at that place. This is first part of this numerical. This is what earth magnetic field. This is what horizontal component. This is what vertical component. This is dip. When conductor moves in magnetic field, the induced EMF was BLV. BLV. So this is the conductor. This is conductor. तो ये विंग्स हैं प्लेन की, ये मूव कर रहा है हॉरिजॉन्टली, तो कौन सा भी चाहिए? ये जो आर्टिकल किया उसमें BLV कहाँ आया था? When magnetic field is perpendicular to area, ये एरिया स्वीप करेगा, ये दिस वन एरिया, तो ये परपेंडिकुलर चाहिए, तो हमें ये होगा हमारा वो B, राइट? What I say, L is 25 delta 30 degree 25 meter
velocity kilometer per hour. E is BLV. What is B here? B here is V, VLV. And what is V? R sine delta LV. R is what? 0.4 Gauss to E R. Sine delta L 25 V one, two, three. 0.4. ये -1 बच गया और ले आए. This is what? 1/2. So it is 2. .5 volt. This is e.m.f. induced. B. Find induced e.m.f. means when earth magnetic field is this. Find induced e.m.f. when horizontal component of earth field is 0.4 Gauss. Same question, same. Different is what? Magnetic field. What was this R? What was this H? R cos delta. What was this V? R sine delta. Again E is what? BLV. What is B? It is VLV. ये चाहिए वर्टिकल. H by V. V चाहिए हमें. V by H. tan delta. See the figure, V by H is tan delta. H is given. V H tan delta LV H. ये था H. 10 watt. 30 L 25 V. So this is 0.04, 10 की -4, 1030. ये sin 30 by cos 30.
So this is what 1030. Hundred means 10. It is what this. Root 3, 5, minus 1, solve, 732.5 by 3. By 3. So it is what? Volt. So what we have to see, we have to find B vertical to plane. और वो कौन सा होगा? ये B. इस तरह का कोई भी a 10-meter long conductor is in east west direction. It falls down with speed 5 meters per second. Find induced e.m.f. and its direction. If horizontal component of Earth magnetic field at that place is 0.4 Gauss and dip 30 degree. ये मार्कर 10 मीटर लॉन्ग है. मार्कर कैसे रख दिया है? ईस्ट वेस्ट में, और ये नीचे फॉल हो रहा है, नीचे. L 10 meter, V 5 meter per second, H
horizontal component, .4 Gauss, (30°). H, ये V, ये डेल्टा, ये रिजल्टेंट इंटेंसिटी। EBLV, वो B क्या है वो देखते हैं। देखिए ये कंडक्टर है, ये मेरा हाथ कंडक्टर ईस्ट वेस्ट में है, ये फाल हुआ परपेंडिकुलर तो ये है, तो इसलिए मैंने लिखा B इज H, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ही है, तो ये मीनिंगलेस हो गया यहां। तो व्हाट इज E? इट इज व्हाट? BLV। and what is B? 0.4 10⁻⁴ L 10 V 5 it is 20 means 2, so 2 10⁻³ watt volt। एक बार दोबारा देखिए, अब ये डेक क्यों छोड़ दिया हमने, अब ये ऐसे फाल हो रहा है, ये मार्कर फाल हो रहा है, फाल। तो कौन सा चाहिए हमने BLV के लिए? परपेंडिकुलर टू एरिया, ये एरिया बना रहा है, ये यही गिवन है, तो दिस इज मीनिंगलेस। B इज H, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट था वही। A magnet revolves around its axis near a current, near a loop, is current induced in loop। This is the question. The magnet revolves around this axis. Yes, not like this, not around this axis. ये indicate कर दिया, it revolves near a loop. If current induced, no change of magnetic flux linked with loop, कितनी लाइन है, जितनी पास पहले हो रही थी ऐसे रोटेट करोगे तो उतनी ही पास हो। ये लूप ऐसे है, ये रोटेट कर रहे हैं, रोटेट, ये मेरी हथेली लूप, जो लाइन पहले थी वही पास होगी, तो नो चेंज ऑफ मैग्नेटिक लिंक विद लूप, सो नो इंड्यूस्ड EMF
hence no current. एक बार यहाँ और देख लीजिए, डायरेक्शन भूल गए हम यहाँ देना, डायरेक्शन। डायरेक्शन ये क्या है? राइट हैंड रूल। ए बी अगेन, ये बी इधर नॉर्थ की तरफ नीचे फॉल हो रहा है, तो ये करंट की डायरेक्शन है। वेस्ट टू ईस्ट करंट की है, तो ईएमएफ की भी यही डायरेक्शन